नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्या. So today we are going to talk about as to what should be a chronology of preparation when we talk about CAT 2020. So a lot of people say that, sir, what is the most important element of CAT preparation, especially in the ARC section? The most important element of CAT preparation in these coming 8 months should be reading books, especially in the ARC section. If you're not reading like 30, 40 pages per day, apparently you're not preparing at all. Trust me, you have joined some coaching institute, you have n number of books, you may be solving n number of questions. But if you're not into reading, things might get a bit difficult. A lot of people say that, sir, मतलब if we are solving like 10 RCs every day or maybe 20 RC every day, or I am taking a test in which in half an hour, maybe in 1 hour, I'm solving 6 to 8 RC paragraphs. That way I'm working on my speed, I'm doing skimming, I'm doing spanning and all these things. बकवास होता है सब, right? These things do not matter. What matters much is what is your stamina in reading. Reading ka 30 pages, 40 pages ka, if you don't have that stamina, when you sit into paper, probably your mind will go blank. You will not understand a single word. Why? Because there's a lot of stress, there's a lot of pressure. So, reading one paragraph, again a second paragraph, third paragraph, fourth paragraph, and then this way continuing to like 6 passages, it requires a lot of stamina, trust me. And you can make this stamina only when you read a lot, number one. Number two, read variety of paragraphs, read variety of books. Read a book on economy, read a book on philosophy, read a book on sociology, whatever you find, just go and read it. A lot of people say that, sir, I don't have interest into some particular subject. Is it important to read that subject? Yes, you should, because you don't know what topic will come in CAT. Okay, so you should take it very carefully. Now, so if we, I have this complete table in which I have shown as to what is very important when it comes down to CAT preparation. First of all, read books. Read as much books as you can, okay? This thing is very important because if you're not reading, things might get bad, as I have already told you. Second, chronology of chapters. When you have started reading, first of all, go for critical reasoning and fact, inference, and judgment. A lot of people do not prepare or solve critical reasoning questions because they think that critical reasoning questions are not asked in CAT, so I will not go for it. मैं पढ़ा रहा था अभी थोड़े दिन पहले and I was teaching critical reasoning and a student suddenly asked me, sir, पढ़ा क्यों रहे हो, एग्जाम में तो नहीं आता है, right? It is not how it works, okay? Critical reasoning is not directly asked in CAT, but it is a very important component of reading comprehension. So if you're not doing critical reasoning, possibly your understanding of language is not getting strengthened. You're not getting mature at language, you're not able to find assumptions, you're not able to find inferences, you're not able to find as to what exactly is the logic which is going on in the paragraph. So, it is very important to solve critical reasoning questions, guys. Number one. After you have understood as to how to go about critical reasoning, start understanding summary-based questions. Right? Now, reading is something which should be continued. Reading is something which you should be doing every day. Reading is something you are not compromising at all. Okay? Do not ever think that, okay, I have started solving critical reasoning FIG questions, so reading is something I can skip. No, you cannot skip. Reading is an integral part of your CAT preparation, and that should happen every day. Right? Now, when you are solving critical reasoning questions, make sure that you solve critical reasoning questions in such a way that you understand the core of the logic, okay? In the following lectures on our YouTube channel also, we'll be talking about questions like assumptions के ऊपर chapter पे class हो जाएगी, एक inference के ऊपर हो जाएगी, एक strengthening और weakening के ऊपर हो जाएगी. So that we keep on doing. So you don't have to worry as to मतलब कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है. That is my responsibility. Trust me, guys. If you are in this channel, just subscribe it, and I'm sure you will sail through. Okay, that is our responsibility. So we'll start with the first chapter, which I'll be focusing on is critical reasoning and fact inference judgment. Why? Because this will strengthen the logic of the language. Okay, this will make you more mature at language. It will help you understand as to what goes behind the words which is written. Right? So वो कहते हैं ना, बहुत एक पढ़े लिखे और तमीजदार व्यक्ति ने बोला था कि जो लिखा है उसको समझने से इंपॉर्टेंट है क्या नहीं लिखा है, राइट? अ गुड रीडर रीड्स a line, the lines what are written, but the excellent reader reads between the lines, okay? And reading between the lines and reading behind the lines, both are very important things which you need to do as a CAT aspirant, okay? So, okay. Next is summary-based questions. Summary-based questions are very important. Why? Because
फिर मुझे याद आती है मेरे टीचर थे, वो कहते थे कि मैंने उनसे पूछा कि कैट की तैयारी कर रहा हूँ सर, या फिर हाउ टू गेट बेटर एट लैंग्वेज, सो ही सेड कि द बेस्ट वे टू इम्प्रूव ऑन लैंग्वेज की खूब पढ़िए, उसको थोड़े में लिखिए, और रूल नंबर 2 खूब लिखिए। तो खूब पढ़ेंगे उसको थोड़े में लिखेंगे, और खूब लिखेंगे इसका मतलब और ज्यादा पढ़िए और ज्यादा लिखिए। So summary writing is something which is an integral part of making the backbone of the language very strong. A lot of people skip it, right? They think that writing is not important. Understand, CAT में questions नहीं आते हैं. They check as to how strong you are at language, how strong you are at understanding and delivering the language. So वहां पे तो ओवरऑल अगर काम किया जाए, ज्यादा होलिस्टिक ग्रोथ अगर लाया जाए लैंग्वेज में तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चैप्टर वाइज कोई कैट में प्रिपरेशन नहीं होती, स्पेशली वीए एनआरसी सेक्शन, ओके। मैथ्स में हो सकता है, लेकिन एलआरडीआई और वीएआरसी सेक्शन में तो मुझे लगता है कि आप चैप्टर वाइज कभी तैयारी कर ही नहीं सकते हैं कि ठीक है जी हमने सीआर के 100 सवाल लगा लिए, अब सीआर के कोई भी सवाल आ जाएगा जी मैं एकदम मार डालूंगा। ऐसा होता नहीं है एक्चुअली, क्योंकि वो आपको शायद समझ में नहीं आ रहा आप क्या कर रहे हो, राइट। सो फर्स्ट मेक योरसेल्फ स्ट्रांग एट लैंग्वेज, ओके। नाउ ऑड मैन आउट, ऑड मैन आउट जी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ऑड मैन आउट इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज फिर से आप अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज आपका बेटर होता है। आप 4 स्टेटमेंट लिखे होते हैं तो पता चलता है कि भाई कैसे काम करना है आपको। तो दिस इज वेरी गुड चैप्टर 12। Then go for parajumbles when you have gotten mature at language. Then go for parajumbles, and then you should move on reading comprehension. And when you have solved this verbal ability section, trust you me guys, 10 questions come from these all chapters. And अगर 10 सवाल सीआर छोड़ दो, सीआर तो नहीं आता, लेकिन समरी, ऑड मैन आउट, पैरा जंबल एंड पैरा कंप्लीशन, आई विल राइट हियर पैरा कंप्लीशन एज वेल. Para completion is that a paragraph is given to you, the last sentence is omitted and you have to fill that to which is the right statement. तो इसमें से तुमको 10 सवाल मिल जाएंगे कैट में, ठीक है। और इसमें से अगर तुम्हारा ये मजबूत है और अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज मजबूत है तो आराम से तुम 5 से 6 क्वेश्चन तो यहां से निकाल सकते हो। तो लेट्स टेक यहां से 6 क्वेश्चन तुमने निकाल लिया। अब बचता है तुम्हारे पास रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। जैसा कि मैंने पहले ही तुमको बताया था कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन तो तुमको तभी जाना है जब रीडिंग आपकी कम से कम 3 महीने की हो चुकी है और 30 पन्ने डेली आप पढ़ते हैं। जब आप 30 पन्ने डेली पढ़ते हैं ना तो आपकी रीडिंग बड़ी मजबूत हो चुकी है और इस सब पे काम करके आपका लैंग्वेज का जो स्ट्रेंथ है वो भी अच्छा हो चुका है। एंड देन यू शुड गो फॉर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। सो रीडिंग शुड बी कंटिन्यूड। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के पैसेजेस को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि यार रीडिंग करो और किसी पैराग्राफ को आधे घंटे में 4 पैराग्राफ्स उठाइए एंड ट्राई टू सॉल्व देम एज फास्ट एज यू कैन। हाउ टू डू दैट वी विल टॉक अबाउट इट, दैट्स नॉट एन इशू इन द कमिंग लेक्चर्स ऑब्वियसली। सो फिर से मैं बोलता हूँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। स्टार्ट टॉपिक टेस्ट, फंडामेकर्स का जो पोर्टल है अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, बिकॉज उसमें हम लोग पोर्टल पे बहुत सारे क्वेश्चन लेते रहते हैं। वी हैव अ क्वेश्चन बैंक ऑफ ऑलमोस्ट 10,000 क्वेश्चन। अगर आप फंडामेकर्स के स्टूडेंट नहीं है तो आप कोई भी कोचिंग में पढ़ते हो भाई आपको मटेरियल मिलता ही होगा, राइट। सो टॉपिक टेस्ट लगाइए, सेक्शनल टेस्ट लगाइए, खूब ढेर सारी क्वेश्चन को सॉल्व करिए। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लॉट ऑफ पीपल इग्नोर इट, मॉक टेस्ट, राइट। मॉक टेस्ट, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं मॉक टेस्ट तब लिखेंगे सर जब कैट की तैयारी कर लेंगे। नहीं, पहले मॉक टेस्ट लिखिए फिर तैयारी हो पाएगी जी। बहुत सारे बच्चे तो कहते हैं कि सर हमने सितंबर आ गया एक भी मॉक टेस्ट नहीं लिया क्योंकि सिलेबस ओवर नहीं हुआ है। तो आपको जिसने भी ये बात बोली है कि कोर्स खत्म करके मॉक टेस्ट लिखते हैं, बिल्कुल गलत बोला है जी। आप जी मॉक टेस्ट लिखिए और फिर आप तैयारी करिए, बिकॉज देन ओनली यू विल बी एबल टू नो एज टू व्हाट इज गोइंग रॉन्ग इन योर प्रिपरेशन। ठीक बात है। And past year questions obviously very important. Keep solving the past year questions and that is very very important. So ये एक हम लोगों का एक छोटा सा वीडियो था जो आपको गाइड करेगा as to what should be the chronology of solving. I'll repeat it in a nutshell. First, read 30 pages per day. This should be a regular affair, guys. Critical reasoning questions, FIJ लगाओ, उसके बाद summary based question, odd man out, para jumble, para completion और para completion, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, और फिर हम लोग टॉपिक टेस्ट पे जाएंगे और मॉक टेस्ट। और टॉपिक टेस्ट मतलब इनको सॉल्व करने के लिए भी आप देख सकते हो, दिस इज नॉट समथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दिस वाज फ्रॉम अ शॉर्ट वीडियो फ्रॉम फंडामेकर्स गाइस। लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, एंड इफ एट ऑल यू वांट to get more lectures and you want a section on a particular topic, do let me know in the comment section and we'll do that. Very soon we will be coming with a lot of live classes. Okay. Thank you so much. God bless you all. Good, better, best. Never rest till your good is better and your better is best. We are from Fundamakers, Lucknow. God bless you all. Thank you.